Hello friends, welcome to Kaide Ki Baat. Today I'm going to talk about contract manufacturing agreement and its significance for the companies who give their product to a contract manufacturing company for large scale production. अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जो कि कंपोनेंट बनाती है, कोई मशीन बनाती है या आपके पास कोई डिजाइन है जिसका आपको प्रोडक्ट बनाना है, लार्ज स्केल प्रोडक्ट बेचने हैं, और यू आर जस्ट अ स्टार्टअप हु आर कमिंग अप विद सम प्रोडक्ट एंड यू वांट टू डू अ लार्ज स्केल सप्लाई ऑफ द सेम बट डोंट हैव कैपिटल इमीडिएटली टू सेटअप अ फैक्ट्री सेटअप करना ये काफी कॉस्ट का काम रहता है. इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज देयर, लैंड कॉस्ट इज देयर, रेंट कॉस्ट इज देयर, सेटअप कॉस्ट इज देयर, ऑपरेशन कॉस्ट इज देयर, लेबर कॉस्ट इज देयर. एंड व्हेन यू आर एट अ एंट्री लेवल यू हैव ओनली प्रोडक्ट एंड यू आर येट टू एक्सप्लोर द मार्केट, you are yet to reach to people. So in such cases, there are many companies who provide contract manufacturing services. वो आपसे आपका प्रोडक्ट का डिजाइन लेते हैं, या अगर आपका कोई रेसिपी है तो आपसे रेसिपी लेते हैं. एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जिसको MOQ बुलाया जाता है वो डिफाइन करके लिया जाता है, और वंस दिस MOQ इज सेट आपको उतने पीस सप्लाई कर दिए जाते हैं, उतना क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया जाता है, विच यू कैन फर्दर सेल टू योर टारगेटेड कस्टमर्स. सो बेसिकली अगर आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी है तो while giving your product or while giving your design to any contract manufacturing company, please ensure that you execute a very strong contract manufacturing agreement with these companies. So what should be the element of this contract manufacturing agreement? You are giving some design to that company for manufacturing. So first of all, it is very important that you register your design with इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट. सेकंड थिंग, अगर आपका प्रोडक्ट पेटेंटेबल है तो प्लीज इंश्योर दैट आप उसका प्रॉपर पेटेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके ले. सेकंड थिंग, आपका अगर प्रोडक्ट आप जब दे रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा दैट द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विल नॉट सेल इट टू एनी अदर पर्सन अदर देन यू ओनली, बिकॉज इट इज योर यूनिक प्रोडक्ट, इट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट इज समथिंग फॉर विच यू शुड टेक द मैक्सिमम बेनिफिट एंड मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट. नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, you have to define what are the raw material, what are the ingredients or what are the components which are going to be used in that manufacturing process. अगर आपको एक desired output चाहिए तो आपको जो भी ingredient है उसको भी define करके देना पड़ेगा. मान के चलो अगर आप कोई स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग करके लेना चाहते हो, यू हैव अ यूनिक स्पाइस रेसिपी एंड यू वांट टू गेट दैट मसाला मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देन यू हैव टू गिव द रेसिपी अलोंग विद दैट. उसके जो इंग्रेडिएंट रहते हैं, इंग्रेडिएंट का जो ब्रेकअप रहता है, आपको वो भी देना पड़ेगा. प्लस यू विल हैव टू डिफाइन व्हाट इज द ग्रेड व्हिच यू आर गोइंग टू यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी व्हाइल मेकिंग दैट स्पाइसेस फॉर यू. बिकॉज अगर आपका रेसिपी सही है बट वो सही इंग्रेडिएंट उसमें यूज नहीं किए गए तो ये आपका जो एंड प्रोडक्ट आपके हाथ में मिलेगा, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू सेटिस्फैक्शन, प्लस उसका फिर आपको मार्केट एंट्री में भी बैरियर क्रिएट हो जाएगा. Same with the component manufacturing company or a machine manufacturing company. If you are a machine manufacturer, you are giving a machine for the designing. उसमें जो component use हो रहे हैं उसको भी आपको define करके देना पड़ेगा कि raw material कौन सा use होगा, कौन से grade का use होगा, कौन सा metal use होगा, उसका thickness कितना रहना चाहिए. अगर उसमें कुछ certification required है तो वो certification लेने के बाद ही वो component उसमें आपको देने पड़ेंगे, और ये सब चीजों को वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आपको डिफाइन करके देना पड़ेगा. So if you follow all these things properly, if you have a proper contract manufacturing agreement with the company, you will not get cheated. अगर आपको substandard product मिल जाता है, then you will have a very strong legal case against the contract manufacturing company. Plus, you will get legally protected as the other person will be prevented from giving your product to somebody else or doing it for a similar other company by using your intellectual property. Follow this if you are a company who is into product and who want to give for large scale production to a third party contract manufacturing company. Thank you for watching Kaide Ki Baat. Please follow me for such wonderful videos.